Welcome to our show, The Influencers Talk. I'm your host, Yashika Chhabra, and today we have our special guest, Miss Ankita Mishra, with us. She's a professional singer, writer, and well-known artist. Thank you so much, ma'am, for coming to our show and giving us your precious time. Okay, so can we just move on with the questions now? Okay. I've heard that you have struggled a lot, so can you please share your journey so far? Okay, so I started very early. मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट किया था. Like I was around 7 और 8 एंड उस वक्त से मुझे गाने का, इनफैक्ट मुझे डांस करने का एंड आर्टिस्टिक फील्ड में मुझे शुरू से बहुत इंटरेस्ट था. सो मुझे याद है मेरे टीचर थे जिनसे मैंने एक्चुअली सबसे पहले सीखना शुरू किया, पाठक से, एंड उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. लाइक मेरा एक्चुअली देखा जाए तो ज़्यादा इंटरेस्ट डांसिंग की तरफ था. सो बट you know, he was the one who suggested me, okay, dancing is something that you love the most, but music is something which loves you instead. I decided, okay, ठीक है, डांस करना है, but हाँ, I decided कि मुझे I'll not leave anything, any of them, but पहले singing and then dancing. So then I decided, okay, why not dancing and singing both at a same time. तो फिर यहाँ से मेरी सिंगिंग जर्नी स्टार्ट हुई एंड अक्सर लोग मुझे रॉक स्टार बोलते हैं. वाई? बिकॉज आई ऑल्सो डांस एंड सिंग टू. सो या दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड. एंड उसके बाद फिर द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी वॉज टू कन्विंस माई पेरेंट्स. मैं एक छोटे से शहर से हूँ, सिंगरौली नाम है शहर का मेरे, एंड वहाँ से इंदौर आना, बिकॉज हमारे लिए शायद ये नॉर्मल है अब, बट दैट टाइम इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस आवर पेरेंट्स कि यू नो मुझे अब बाहर जाना है एंड दैट टू अकेले. सो दैट वॉज अ टास्क फर्स्ट, बट सम हाउ आई कन्विंस दैम. दे वर पैसिफाइड कि हाँ चलो ठीक है अब जाओ आप. And when I came here, it was very difficult to make my position. ठीक है, ऐसा कहते हैं कि लड़कियाँ गर्ल्स के लिए बहुत easy होता है, बहुत easy होता है, कहीं पे भी बहुत easily वो काम कर लेती हैं. But no, let me tell you, not at all. If you have some set of disciplines, like you don't drink, you don't smoke, it's very difficult to adjust in this field actually. Yeah. So I started as an anchor. Although I was not good, I was not a good anchor, but still I started as anchor. And उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने contacts बनाने शुरू किए. And I went through so many things, like मैंने बहुत rejections देखे हैं, let me tell you, बहुत reject हुई हूँ. And the first show that I did was, I can't even tell you कितना मैंने उससे earn किया था. That was so मतलब that's something I can't even tell you. I started from there, but I always knew कि मुझे continue यही करना है, because I never chased for money. I always was sure कि मुझे singing में जाना है and I have to gain fame, है ना, मुझे नाम बनाना है and all that. So इंदौर में इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. 2014 में I received an award from Salim Sulaiman sir as Voice of MP Swar Sadhana. That was my very big moment. एंड वहाँ से मेरे मम्मी पापा कन्विंस हो गए कि ओके नाउ यू कैन गो फॉर दिस फील्ड क्योंकि यू आर डूइंग गुड. ओके, सो यहाँ से मेरा अब मैं शोज़ करने लग गई. आई हैव डन मोर देन 1000-2000 शोज़ ऑल ओवर इंडिया में. सो वहाँ से शोज़ स्टार्ट हुए, धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी. आई हैव जज्ड सो मैनी शोज़ एंड ऑल एवरीथिंग. एंड उसके बाद फिर मुझे मध्य प्रदेश गौरव रत्न का अवार्ड मिला. दैट वॉज द टाइम जहाँ पे आई थॉट कि ओके दिस इज़ व्हाट आई वांटेड अभी तक के लिए. ऑफ कोर्स द स्ट्रगल इज़ गोइंग ऑन. आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग. सिंस यू आस्क्ड अभी तक क्या स्ट्रगल देखा, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट दैट आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग. आई हैवंट स्टॉप्ड इट कि हाँ बस हो गया, नहीं. आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग एंड आई वुड लव टू स्ट्रगल ऑल माई लाइफ. सो या दिस वॉज द जर्नी आई हैड. That's so impressive, ma'am. Do you always knew that you would be a singer? That I have mixed answer for this. I always knew that I will be an artist, but as I told you, I was interested in singing as well as dancing. So yes, I can say I always knew that I'll be a rock star. I will be doing singing and dancing, but somehow it went totally on music. वो म्यूज़िक पे ही पूरा हो गया. एंड नाउ आई कैन से कि हाँ सिंगिंग समवेयर आई न्यू इट कि हाँ मुझे इस फील्ड में आगे जाना है, आर्टिस्ट बनना है, बट इतना श्योर मैं नहीं थी कि सिंगिंग ही दैट फील्ड विल बी.
So yeah. Okay. So your own compositions like लेके time जो मैं जानती ना समझ हो गई and other songs have been a huge success. So tell us the challenges you have faced and experience that you have been through during the making of these songs and production work. Okay, this needs a discussion now. Okay, हाँ yes, मैंने बहुत सारी compositions किए हैं and लिखा है and सारे songs को बहुत अच्छा response मिला है. But I would like to share something very important and something that that the problem I faced during the making of ना समझ हो गई. ना समझ हो गई में I had faced so many struggles. I mean, with whom I have worked, जिनके साथ मैंने काम किया है, I would say I didn't have very good experience to work with him. I had to go so much of I would say trouble. I got so much trouble and उन्होंने मुझे काफ़ी I would say I was totally tortured. I would say मतलब मुझे बहुत ज़्यादा that was my worst experience. I would say ना समझ हो गई is one of the most favorite composition of mine that I have done, and I would say that is something I would treat as I would treat myself as parent to that composition, you know. So वो उसके उसमें जो भी problems हुई हैं because of that producer, that is unbearable, and thanks to y'all for giving me this platform to share this. क्योंकि जो भी problem हुई and I'm out of it of course अब, लेकिन हाँ मुझे ये गाना मेरे लिए जितना important था वो उतना ही haunting हो गया because of this experience. So yeah. Would you sing few lines from that song? ना समझ होगी. Yeah. Sure. कई साल तू मैनू पाने ले तरसा, सारा वक्त वे मेरे नाम किता, मैं कर दी गई गानोर वे माहिया, फिर भी कदी तू शिकायत नहीं किता, बदल के मेरे पाथर देनू आज न किवी तू बदल गया, हाय बदल गया. Wow, that's so beautiful. Thank you. Okay, so moving on, who is your inspiration behind music? Okay, my school teacher. My school teacher was one. उनकी खुद की बेटी बहुत अच्छा गाती थी, but उन्होंने हमेशा मुझे प्रायोरिटी दी अपनी खुद की डॉटर को साइड रख के. So he told me कि हाँ how important music was for me. So he was the first inspiration. अगर अभी की आप बात करो तो मैं ऋचा शर्मा को बहुत फॉलो करती हूँ. So she's my inspiration for now. Yeah. So do you regret something that you have gone through, or do you? Is there anything that you would like to undo? Yes, of course. Regret मुझे सिर्फ इस बात का है that I think I would highlight two things here. First of all, that I have like हम सबकी लाइफ में ये होता है, हम आर्टिस्ट हैं, आप वीजे हो, एंकर हो, या कोई भी हम लोग किसी भी फील्ड में हैं. सो इसके अलावा हमारी पर्सनल लाइफ भी होती है, राइट. सो द फर्स्ट रिग्रेट दैट आई वुड शेयर हियर इज आई हैव इन्वेस्टेड सो मच इमोशनली इन माई रिलेशनशिप्स, बी इट अ फ्रेंडशिप और एनीथिंग. सो दैट इज़ अ रिग्रेट कि मैंने बहुत इमोशनली इन्वेस्ट किया है, एंड व्हेन यू एक्चुअली नीड समवन इन योर बैड टाइम्स और वर्स्ट फेज वहाँ पे कोई नहीं होता है. एवरीवन लीव्स यू इवन इफ यू आर डाइंग, राइट. सो वो रिग्रेट है कि आई थिंक आई सो विश कि वो टाइम जो मैंने इमोशनली इन्वेस्ट इतना किया है उसकी जगह पे मैं ज़्यादा हार्ड वर्क एंड ज़्यादा टाइम अपने म्यूज़िक को देती. सो दैट इज़ द रिग्रेट फर्स्ट. एंड सेकेंड ऑफ कोर्स मैंने बहुत लेट सीखना शुरू किया है. आई एम अ लाइट वोकल ट्रेन्ड सिंगर, बट आई रिग्रेट कि अगर मैंने 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, इनफैक्ट 10 साल या बचपन से सीखना शुरू किया होता है तो शायद मैं आज बहुत ज़्यादा स्काई इज़ द लिमिट एटलीस्ट म्यूज़िक के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा सीख पाती हूँ. एंड मेरे गुरुजी हैं सुनील मसूगर गुरुजी, एंड उनसे मैं अभी सीख रही हूँ. आई थिंक इट्स बीन जस्ट 1 year, बट लेट मी टेल यू द विजुअल हैज़ बीन चेंज्ड. मतलब जैसे मैं म्यूज़िक को देखती थी वो कुछ और था और जो मैं अब देखती हूँ वो कुछ और है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई गुरुजी. सो येस, दिस इज़ अ रिग्रेट कि आई विश मैं थोड़ा पहले सीखती.
ज़्यादा अच्छा होता है. But you are amazing. You are totally Thank like you. I've heard a lot of your music. So yeah. Oh, that's so sweet. Thank you. Okay, since you have already worked with our team Prestige Media during the making of Jo Main Janti, so can you please share your experience? How has been? Jo Main Janti has been one of the most special, most beautiful time, I would say, है ना. वो मैंने of course यहीं रिकॉर्ड किया है, एंड मैं इसलिए बोल रही हूँ वो बहुत स्पेशल था बिकॉज that was the time when I got to know that okay, I am a composer too. जो मैं जानती was a song जो मेरे पास लेके आया गया कि हाँ okay, this is a competition and you can improvise. आप improvise कर सकते हो, modify कर सकते हो. I modified it, I improvised. मैंने कुछ खुद के भी composition, कुछ lines उसमें add किए, and then I got to know, oh my god, I'm a composer too. मैं compose भी कर सकती हूँ. So ये जितनी भी compositions आप मेरी सुन रहे हो अब, वो after जो मैं जानती. So if you'll ask what was the experience while recording जो मैं जानती, it will always be amazing because मैं बहुत कुछ उस गाने से सीखा है मैंने, and of course that was my texture. So I am very close to that song जो मैं जानती. Yeah. Okay, ma'am. So tell us, what was the turning point in your journey? Turning point, I think दो ऐसे बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स आई वुड से थे मेरे लाइफ के. फर्स्ट, जब हम सब सफ़र कर रहे थे कोविड टाइम्स, ऑफ कोर्स एवरीबडी वाज फाइंडिंग वर्क एंड स्ट्रगलिंग, घर पे रहना पूरे दिन. वो मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था क्योंकि बिफोर दैट आई वाज स्ट्रगलिंग, लाइक यू नो आई वाज गोइंग लाइक दिस, ऐसे जा रहा था मेरा जर्नी. बट कोविड वाज द इंसिडेंट आई वुड से जहाँ पे एकदम से इट टुक अ जंप because मेरा one of my song तेरा चेहरा got viral and everybody was struggling that time for work and I was just sitting and relaxing back at home, and वो मेरा YouTube से मुझे पे भी हो रहा था and बहुत काफ़ी नाम भी हो रहा था. So that was first turning point, but when suddenly it got viral and तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था. Of course वो उसके बाद जब कोविड ख़त्म हुआ तो मुझे इट हेल्प्ड अ लॉट. मैंने बहुत सारा काम किया उसके बाद जस्ट बिकॉज क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बेस बन गया था. सो नॉर्मली क्या होता है, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं और एकदम से लक काम करता है या फिर आपका हार्ड वर्क यू फाइनली गेट व्हाट यू हैव वर्कड हार्ड फॉर. बट मेरे लिए ऐसा था कि पूरी टाइम मैं हार्ड वर्क करती रही उस टाइम. आई एम जस्ट गोइंग एंड एकदम से जब मैं बैठी कोविड में घर पे, जब मैं बैठी इट एक्चुअली टुक प्लेस, समथिंग हैपेंड एंड वो एकदम से वायरल हुआ गाना. एंड so yeah, that was unexpected, I would say, first thing. And the second turning point I would say is opposite to it. Recently if you allow me, like that's quite personal bhi hai wo. It's just there was a time when I met some of my friend, and music became a secondary option. Right, I was so much as I already told you, I was so much invested emotionally there कि मुझे लगा okay, music चलता रहेगा. I don't have to just all time bang on कि हाँ बस करना ही है and all. So मैं बहुत ज़्यादा involve हो गई and उसमें during the time ना समझ हो गई happened. और उसका जो experience था that also somewhere मैं depression, I kind of got into depression, and let me tell you that's the worst thing anybody could ever go through. So उस वक्त there was a time when I even thought to just end up my life. Like I had that much depression that time, and that was a turning point क्योंकि वहाँ पे the friend जिसके साथ मतलब मैंने इतना time बिताया and I trusted him so much. Everyone I would say जो भी उस वक्त मेरे लाइफ में था, they just ran away. Like it was unexpected कि मैंने जितना वक्त दिया है, मैंने अपना करियर में बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी just to be with them, those people, and they just left knowing that I could end up my life, I could harm myself. They just left. So that was my turning point कि no matter what we should always focus on what we're doing first. You never emotionally invest yourself or indulge yourself that much कि वो आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा hurt कर जाए. So I think that was the second turning point जहाँ मैंने सीखा कि नहीं, सब कुछ करियर है and then rest of the things matters. Okay, so like how is your this experience is going?
interview and all. Okay. जैसा कि मैंने बोला, it was very much needed somewhere, and thank you so much for all of you इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, स्पेशली टू जुबेर सर. आई थिंक जुबेर सर इज़ द वन जिन्होंने मेरी जर्नी ज़ीरो से देखी है. लाइक ही वाज माय प्रोफेसर एज वेल. बहुत सपोर्ट किया है, जो मैं जानती भी उनकी वजह से मुझे मिला था. एंड ये भी जो सेटअप आपने मुझे प्रोवाइड किया है, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ जुबेर सर. थैंक यू सो मच सर. You always have helped a lot, and I am really grateful for this. Is there any piece of advice that you would like to give to the upcoming influencers and artists? Yes, of course. मैं एडवाइस वही कर सकती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है या सीखा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रिग्रेट था मेरा कि मैंने बहुत पहले से स्टार्ट नहीं किया सीखना. सो दिस इज़ द फर्स्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव कि प्लीज़, नो मैटर विच फील्ड यू बिलोंग टू, डेफिनेटली जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप गुरु, योर गाइड, वन हु कैन गाइड यू, आप ज़रूर ढूंढो, उनसे सीखो, बिकॉज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन इफ़ यू आर सिंगर और किसी भी फील्ड में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत पहले सीखना है, नॉट जैसे मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ, सो आई हैव अ रिग्रेट. तो दिस इज़ द फर्स्ट एडवाइस. एंड सेकेंड, whenever you get a chance to prioritize your things, always prioritize your career over your so and so things, like even if it is your favorite person or any unfavorable situations. But I would always suggest everyone ki, I'm not saying to leave any of them, but yes, if we have choice, so definitely we should always prioritize our career, our choices, our interest, and खुद को हमें prioritize पहले करना चाहिए, and then rest of the things, be it a friend, be it a relationship, be it a situation. Yeah, okay, so that's it. These are the few questions that I wanted to ask. It was so nice talking to you, ma'am. Thank you so much for joining us. So before ending this video, we would love to hear your voice. Okay. टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा उसको किसने ऐसा लूटा कि फिर उड़ ना पाया. गिरता हुआ वो आसमां से आके गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल थे, कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.